we can see a stack implementation. So let me just go back and talk about stack using array. Can we make a stack using array? Yes, absolutely. I want to make a stack using array. And to make a stack using array, make a stack using array that is in front of me. I just want I will initialize the top value. A top, I can take two things. One thing I can take the array, and second thing I can take the top, which is initially at the index of -1. यहाँ पर मैं कह रहा हूँ it is a array implementation of a stack. It is array implementation of a stack. Now I want to add the elements. Wait, 10, 20, 30, 40. I want to add it once again. Now you need to again follow the diagram. ज़्यादा अकल मत लगाओ, diagram follow करो. Now I want to add 10. अब ये मेरा kind of empty stack है. It is my empty stack and I want to add the element. हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं stack using array. Stack using linked list, last in first out कैसे होता है ये हमको समझ में आ गया. Stack using array, last in first out कैसे होता है ये हमको करना है. We are talking about that. If you are lost somewhere, please return back and pay attention over here. You continued further. You continue further. What is to be done? If you want to add the element, कॉमन सेंस है -1 लोकेशन के ऊपर मैं एलिमेंट ऐड करूंगा नहीं. अगर मैं करता हूं तो एक्सेप्शन आएगा. एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, दैट इज कॉमन सेंस. आई नीड टू फर्स्ट increment the top and then I need to add the element there. Okay, that is good. If you want to add one more element, let's say I want to add 20. Where do I add the 20? I can say increment the top and then I can add the element there. I want to add one more element. Oh, you go ahead, you increment the top and then you add the element there. So I want to add one more element. Oh, continue further. You can increment. पहले increment करो. You see the option. पहले increment करो और फिर वहां पर value करो. So what you are saying? I'm simply saying that while pushing, simply say top plus plus. A top is the index, which is initially -1. You first say top plus plus, and then you say AR of top is equal to the new value that you want to initialize. That value that you want to push it. It's very easy. By the way, how do I get the topmost element? Array आपके सामने दिख रहा है. How do you get the topmost element? How do you see the topmost element at this time? आपको दिख रहा है? नहीं, हम लोग array के लिंक की बात ही कर नहीं रहे. Array का लिंक कितना भी बड़ा होने दो. Who cares? I do not bother about array length. Yes, जो कुछ भी मेरे को topmost element diagram check करो. In this case, the topmost is nothing but error of top. So I'm simply saying that the topmost element is nothing but error of top that I need to return. Okay, that is still fine. By the way, if I want to pop the element, what is popping the element? What is popping the element? A popping the element मतलब जो topmost होगा उसको निकालना पड़ेगा. A 10, 20, 30, 40 मुझको 40 निकालना है. 40 निकालना है. You just say top minus minus. I said you just say top minus minus. That's it. So this is 40 is as good as deleted. Please note, I'm saying that 40 is not deleted. I'm saying that is as good as deleted. तो मैं जाके उसके अंदर कुछ चेंज नहीं कर रहा. वहां पर वैल्यू 40 रहने दो, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता. बिकॉज माई इफेक्टिव स्टैक इज फ्रॉम 0 to 2 ओनली. यही मेरा स्टैक है जितना मैं देख रहा हूं. अगर मुझको और एक एलिमेंट डिलीट करना है तो दैट इज स्टिल पॉसिबल. अगर मुझको और एक एलिमेंट डिलीट करना है, all I need to do is that top minus minus as good as this element is deleted. As good as this element is deleted. So why you are saying so? I'm saying so because in future you said that I want to add a new element. If you want to add a new element, what will happen? Please note, if you're adding one more element, you can say top plus plus and you can add new element over here. If you want to add one more element, you can add always new element over here. So you can overwrite the old elements. You can overwrite the old element. So वैसे भी हमारा stack यहाँ तक है. If you at all considering that I want to add one more element, continue further, you can add the element on the top of it. Or if you want to add one more element, you can still add the element on the top of it. And I want to add one more element. I want to add one more element. I want to add one more element. Oh, sorry, stack is full. Oh, you find that this stack is going to be full. A full when it is full, when stack is full. Oh, stack is full when the top
is equal to your max minus 1, or you can say size minus 1, length minus 1. आपको जो कहना है वो कहो, it is up to you. So I'm saying that it is reaching till the last location, so you can say that the stack is going to be full. Oh, I understand that. Hey, by the way, how do you delete the elements? How do you delete the elements? You just start deleting the elements one after another. Just come down. Yeah, how do you delete the element? Continue deleting the element. You say top minus minus, so this is gone. Sorry, this is gone. Again you say top minus minus, top minus minus, so this is gone. Again you say top minus minus, top minus minus, this is gone. Again you say top minus minus, I can say that this is gone. Again you want to say top minus minus, just a minute, huh? Again you say top minus minus, and then this is gone. You continue further. Again you say top minus minus, and then this is gone. I want to delete one more, one more, one more. No, there is nothing to delete. You find that your initial condition was stack was empty, and at that time your top was minus 1, and your top was minus 1. It is done. Is that okay? And this is how we can have the stack implementation using array. You must have seen that यहाँ पर हमने कुछ तो अलग देखा है, कुछ तो अलग देखा है. इसमें से पुश वाले में कोड में मुझको लगता नहीं यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है. पुश इज फाइन, peak is fine, pop is fine, is empty is fine. Have you noted that यहाँ पर हम लोगों ने is full is something that you are talking extra, or are we talking is full extra? Yes, we are talking is full extra. जो मैंने array के सॉरी लिंक लिस्ट के साथ नहीं दिखाया था. अगर आपने नोट किया था लिंक लिस्ट में तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं देख रहे थे. हैव यू नोटेड दैट? वहां पर हम लोग कुछ देख ही नहीं रहे थे. यहां पर मैं से आपको बता रहा था कि वी हैव गॉट ऑपरेशंस दिस 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 दिस. क्यों? क्योंकि लिंक लिस्ट कैन ग्रो डायनेमिकली, but array storage is always fixed storage, and that is the reason मैंने यहाँ पर each full operation लिखा भी था, ये लिखा भी था, लेकिन मैंने इसको स्टार मार्क भी किया था, saying that I just put a condition, conditions applied. The is full, is it operation of a stack ADT? I said that it is depend on a implementation. अगर आप लोग लिंक लिस्ट से कर रहे हो, अगर आप लोग लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट कर रहे हो, यू नेवर बॉदर अबाउट इज फुल कंडीशन. जब लोग लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट कर रहे हो, you never bother about the is full implementation. When you are dealing with the array, then and only then you talk about the is full operation. Otherwise उसकी कोई जरूरत नहीं है. Okay, so I understand it, and if I understand that, so this is about stack implementation is in front of me. Why not I go ahead and I try to implement a stack programmatically. So मैं खुद से एक फिक्स साइज का स्टैक इंप्लीमेंट करना चाहता हूं. ये सब कुछ आपको दिख ही रहा है. बाय द वे कोई मुझको ये बताएगा इनिशियलाइजेशन में क्या होगा? व्हाट शुड बी द इनिशियल केस? दैट इनिशियल केस में लिखना भूल गया. सो कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द इनिशियलाइजेशन? Initialization is going all the way, top is equal to minus 1, and your array should be ready. Initialization is all the way this much, nothing extra I need to do. So take care of the initialization and take care of preparing your array. Preparing your array, if you want to allocate dynamically, then you might want to allocate it something like this. I hope you got my point. Correct? And if you understand that, let us just go ahead and write our own stack. Write our own stack. Write our own stack. Let's close. File. हम लोग इतना देखेंगे and then we'll take a break. It's hardly a very small project, so that should not take much of time. Stack implement करने से आसान काम और कुछ नहीं होता. So we will quickly talk about that. Done. Done. So like a main there, and then you continue further. You start writing your own class stack. Okay, my own class stack.
By the way, it is your own class stack in your own package. वैसे एक प्रीडिफाइंड स्टैक भी आता है जो आपने ऑलरेडी जावा कलेक्शन के साथ पढ़ लिया है. So it will have its own two fields. One, अभी मैं array of stack sorry मैं stack of integer बना रहा हूँ इसलिए integer member है. You can always go ahead, you can make it like a object type. If you make it object type, what is the advantage? You can store any type of data into that. कोई जरूरी नहीं कि आप लोग सिर्फ इंटीजर रखो. ऑब्जेक्ट टाइप का एडवांटेज ये है. या फिर जहां तक मुझको पता है आप लोग यहाँ पर टेम्पलेट भी यूज कर सकते हो. टेम्पलेट इन जेनरिक्स. चॉइस इज योर्स. व्हाट यू वांट टू डू. आई वांट टू कीप इट सिंपल. ऑब्जेक्ट बनाने का काम आई एम लिविंग इट फॉर यू पीपल इफ यू आर इंटरेस्टेड इन. Private integer top. Okay, done. And then let us begin with the code that we are talking about, the initialization part. ये हम लोग यूजिंग एरे बना रहे हैं तो डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉर द मैक्सिमम साइज टू बी पास देयर. एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर द मैक्सिमम साइज टू बी पास देयर, simply say arr is equal to new integer of the given size first and top is equal to -1. Done. You continue further, you implement the next function, let's say push function. At a push function, what you want to push? I want to push the element integer val. I'm trying to push the element. If you're trying to push the element, what is to be done? It is hardly 2 lines of code. Top plus plus, top plus plus, arr of top is equal to value. Okay, that is possible. What about pop code? Pop code is also very simple. Public void pop, and it is even simple. All I need to do is only top minus minus, nothing else. If you want to do the peak, okay, peak is also super simple. All I need to do is a peak operation and you simply say return arr of top. Oh, this is done. So all your basic operations, oh, that is working. What about is empty is full? Let us continue further. It is like a boolean return type. I'm saying that is empty. And when it is empty, oh, it is empty when top is equal to -1. So when the condition is true, it will return true. When the condition is false, it will return false. This is going to evaluate is the boolean value. So when it is true condition, it will return true value. If it is false condition, it will return false value. और जैसे कुछ लोग इसके लिए भी unnecessary की if else लगाते हैं, मेरे को पसंद नहीं आता. If you like it, go ahead and write it your own if else. इतने सिंपल चीज के लिए if else की कोई जरूरत नहीं है in my opinion. And then is full. What is the logic of is full? Is full. I just want to say that length -1, isn't it? That's it. Over. So all your basic code is written. So what about checking? हाँ, वैसे तो अभी मैंने चेकिंग नहीं किया है, बट इफ यू एट ऑल वांट, नहीं सर कॉमन सेंस है, अगर मेरा एरे फुल होगा, हैव अ लुक एट दिस, अगर मेरा एरे फुल होगा तो क्या हम लोग इसके अंदर पुश कर सकते हैं? टू बी फ्रैंक नहीं कर सकते. तो इफ यू वांट यू कैन हैव द एक्स्ट्रा चेक देयर. इफ इट इज ऑलरेडी फुल, if it is already full, what is to be done? Can someone help? If it is full, what is to be done? How do you push in that case? Not possible. अगर मेरा already stack full है, what do I do? Yes, it's a good idea. Since we are Java expert, we should always go ahead and we should throw the exception. Runtime exception will do. And I'm simply saying stack is full. Okay, stack is full. And on the similar line, if your stack is empty, then if your stack is empty, then you cannot pop further. That is again common sense. You can just mark it stack is empty. All right. And then again you continue further. The peak. Oh, that is also going good. That is also going good. So now things are comfortable. Things are clear. I hope it's not a problem. अब सर इसको कॉल कैसे करेंगे? Go ahead, write a minute program and complete it. Go ahead, write a minute program. Minute program you already know. We integer choice and everything. Let us quickly finish this so that you can copy paste it, you can run it, you can test it whether it is working for your end, and then we can take a break. ये मेरा stack है. Stack S is equal to new stack, and I'm creating a stack of size 6 as per my diagram. So let me ask user, what do you want to enter, bhai? So 0 is for exit. This is a very boring part. So you want to push the element, you want to pop the element, you want to see the topmost element if you are interested in, and then enter the choice.
ओके, लेट यूजर टेक अ चॉइस, लेट्स से स्कैनफ, नहीं स्कैनफ नहीं, सॉरी, हम लोग कहाँ पर हैं, वी आर ओवर हेयर. So choice is equal to sc dot next int, right? sc dot next int, but where is sc? Okay, scanner, scanner sc is equal to new scanner. All right, system dot in. All right, at the end sc dot close, it is a auto closable, I need to take care. Done. So switch case, and in a switch case, what we are planning, I'll like a, put a choice. Okay, and we have got like a case one for push, good, and case 2 is for pop. Okay, and we have like case 3 is for peak. If you are interested in break, आपको full और empty के भी extra cases लगाने हैं, आप लोग लगा सकते हो, I don't bother. You continue further. All right, हाँ क्या करना था, I want to take the value from the user and I want to push that. No problem. Let me ask user, enter value to push. Value to push. Okay. Val is equal to sc dot next int. All right. And then you make a call s dot push. You pass the value. Done. The first part is in place. Second part, you want to pop the element. I want to print the popped element as well. So यहाँ पर मुझको यूजर से तो नहीं लेना है आउटपुट, बट व्हाट आई वांट टू डू इज दैट, आई वांट टू पॉप. अगर मैं सिर्फ पॉप करता हूँ तो प्रॉब्लम क्या होने वाला है, अगर मैं सिर्फ पॉप करता हूँ तो एलिमेंट माइनस होने वाला है, बट आई विल नेवर गेट टू नो दैट विच वन आई हैड पॉप्ड. ओके, आई कैन से दैट वैल इज इक्वल टू एच डॉट पिक. तो पहले मैं देख रहा हूँ कि टॉप मोस्ट कौन सा है, और जो भी टॉप मोस्ट होगा उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, और डिलीट करने के बाद में मैं उसको वापस से प्रिंट कर रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू प्रिंट इट, आई से दैट द पॉप्ड वैल्यू is nothing but val. All right, it is also there. You continue further. The pick the topmost value that you want to see there. अब यहाँ पे तो pop नहीं करना है, सिर्फ pick करना है. So I say that the value that you have seen on the topmost को या peak को, whatever the value you are giving it this. So will it work? Obviously I need to put in like a minute program, तो मुझको इसको loop में डालना चाहिए था. तो let me put in loop and then it is done. So do while choice is not equal to 0. So will it work? Go ahead, try it. Will it work, not work? करके देखो. Right click, run as Java application, and you start pushing it. 1, I said 10, 20, oh sorry 29 गया, कोई बात नहीं. 1, I said 30, 1, I said 40. Take a look at this. हम लोग ये डायग्राम कर रहे थे 10, यहाँ पर 20 की जगह पे मैंने गलती से 29 एंटर किया है. 30, 40. Now tell me if I pop, what will you get pop first? यहाँ पर अगर मैं पॉप करता हूँ तो पहले क्या पॉप होगा, 10, 20, 30, 40 we have popped, push, so 40 will be popped. Let us just check it. Oh yes, 40 is popped. And if I pop it once more, now it is 30 is popped. Oh, that is fantastic. Let me push few more values. 50, 60, 70, 80. So it is 50, 60, 70 and 80. So I have pushed all these values, and if I try to push one more, what will happen? I'll get exception. Let's try it. So I'm saying that 1, and I'm trying to push the value, let's say 90. But wait, it is stack is full. It is not allowed. Let us pop the value. Which is the first value that you should be getting. Up 80, 70, 60, 50, 29 and 10. I guess it will go in this order. Let's see. 2, 80, 70, 60, 50, ये 20 के गलती से 29 हुआ था, तो 29, 10 and one more, one more. I guess it's exception. Yes, the stack is empty.
You get the exception in front of you. You simply say 0, program is terminated, and you are good to go. I believe this is just how you can implement your own stack. It is in front of you. It is in front of you. Let us take a break. You get time, you digest it, you copy paste it, you run it. You have any questions, let me know. If not, if not, I believe we can talk little, क्यों हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन I believe that we will go for like a infix, prefix, postfix. Q is like very simple part, so we will see. Okay, I hope you finish with the stack program. You must have copy pasted and it must be executing. You must have checked it. That things are very simple, straightforward. तो यूजिंग लिंक लिस्ट बनाना है तो वैसे भी आसान है, आपके पास ऑलरेडी बना बनाया है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. एज फार एज स्टैक इज कंसर्न यूजिंग एरे डेफिनेटली आप लोग बना सकते हो, बट अगेन बीइंग प्रैक्टिकल, ट्राई टू अंडरस्टैंड. बीइंग प्रैक्टिकल, आई ऑलवेज बिलीव, इज इट एट ऑल नेसेसरी that you start writing your own stack, you start writing your own queue, you start writing your own linked list? Oh no way. अगर आपके डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, अगर आपके लैंग्वेज के अंदर रेडीमेड कलेक्शन का सपोर्ट है, why not to utilize that, isn't it? So you just go ahead, you just go ahead and you find that, there is a ready-made queue and stack available into the Java collections. एक Java के अंदर built-in available है. So Java के collection में stack और queue जो built-in available है, I am very sure you must have already seen that. So there is a stack available. Anyone knows that who is the base class for this stack? इस stack का base class कौन सा है? It is a class definitely. It is a class and base class is vector. Yes, absolutely correct. So it is a inherited from vector. So ready-made stack is available. You can always go ahead and use it. And there's a ready-made functions given. Push function is given, pop function is given, pick function is also given, and is empty function is also given. So जब आपको actual program करने हैं, at that time you may not waste your time in creating a stack. See again, वापस से इंटरव्यू में जब क्वेश्चन आता है या एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं, that you are supposed to do this operation using stack. So at that time, it is not really expected that you go back and you start implementing your own stack first. Not at all necessary. अगर आपको algorithm करने के लिए बोला है, you should have a focus on algorithm. You should not have a focus on making a stack. हाँ, अगर if the exam question is making it very clear कि नहीं, you please first implement your own stack and then do the algorithm, तो बात अलग है. लेकिन अगर एग्जाम आपको बोल रहा है कि इनफिक्स टू पोस्टफिक्स आपको करना है, so infix to postfix आपको करना है, and so it is problem statement is talking about only infix to postfix. It is not talking about कि whether you should create your own stack, whether you should not create your own stack. Ideally you should go with like a predefined stack. Ideally you should go with the predefined stack. If it is available in the language, you should be using it. By the way, stack के लिए readymade support है, queue का support थोड़ा सा अलग है I guess, because ये जो queue है, it is an interface है और क्यू का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. सो देयर इज अ फंक्शन अवेलेबल. तो यहाँ पर उसके नाम अलग है. यहाँ पर अलग नाम क्या है? दिस इज लाइक पुश बट नेम इज गिवन एज ऑफर. दिस इज लाइक पोल लाइक अ पॉप, लेकिन नेम इज गिवन एज दिस वन. पिक इज सेम, is empty is same. Anyone knows any class which is inherited from queue interface? क्यू इंटरफेस से इनहेरिटेड आपको कोई क्लास पता है क्या? Yes, absolutely valid. There is a class available by the name array_dq. The array_dq class is inherited from the queue. Any other class? Any other class if you are interested in? There is even a simple class available called the linked list class. Linked list class, go and check it. Even linked list class is also inherited from the queue interface. So I'm saying that you can either create an object of an array_dq or you can create an object of a linked list instead of writing your own queue. If you are at all trying to solve the problems, if you are at all trying to solve the problem, do not waste your time in creating a queue. Go ahead, take the ready-made queue and you focus on a problem that you are trying to solve. I hope you are getting my point. And if you are getting my point, let us just continue further. Let us just continue further. तो अब ये, तो अब मैं आगे जो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताने जा रहा हूँ, जो डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं,
Please note that I'll be focusing on using a ready-made stack. I may not keep on writing my own stack again and again, or I may not even copy paste my own stack. We will focus on like a solving a problem. We'll focus on solving a problem. And what is that? I want to do infix to postfix conversion. First of all, before you start talking about infix to postfix conversion, or let's say infix to prefix conversion, a very first question that usually come into the mind, ये infix, prefix, postfix होता क्या है? So let me just go ahead. Let me spend a little time explaining you what is infix, what is prefix, what is postfix. A very little time. ये हमने already आप लोगों ने जो entrance exam दिया था उसके लिए आपने already prepare किया हुआ है. But still my question is that ये इनफिक्स प्रीफिक्स पोस्टफिक्स होता क्या? इनफिक्स प्रीफिक्स पोस्टफिक्स होता क्या है? दैट इज माय क्वेश्चन. व्हाट इज इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स? I would simply say that infix, prefix and postfix, they are not traversal techniques. In order, pre-order, post-order, they are the traversal technique. मैं यहाँ पर इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स की बात कर रहा हूँ. सो इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, these are said to be something called as expression notations. What is this? This is nothing but expression notations. इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स आपके जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है उसको नोट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के तरीके. तो इनफिक्स तरीका क्या कहता है? इनफिक्स तरीका ये कहता है इट इज योर ऑपरेटर इज इन बिटवीन द ऑपरेंड. ऑपरेटर इज in between the operand, that's why it is referred as infix. When you say that the operator is in between the operand, it is called an infix. Okay, go ahead. What is prefix? Prefix, the operator is before the operand. Operator before the operand, you call it the prefix. And finally, it is AB plus. What is AB plus? AB plus, the operator is after the operand. Post in the sense operator is after the operand. That's why it is called a postfix. So these are the expression notations. Now you ask the next question. So sir, which expression notation is most common? प्लीज अंडरस्टैंड. और ये तीन तीन नोटेशन क्यों है? हमको एक भाषा में लिखा हुआ समझ में आता है. हाँ, मुझको पता है आपको एक भाषा में लिखा हुआ समझ में आता है. बट यू प्लीज अंडरस्टैंड दैट when it come down to human solving, when it come down to the human, I say that this is a method that we use. This is a method that is used by the human or the this is a method that we use in the mathematics. So आप लोगों ने जो बचपन से स्कूल मैथमेटिक्स अरिथमेटिक जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आई एम वेरी श्योर यू पीपल हैव फॉलोड दिस मेथड. सो आपको हमेशा पढ़ाया जाता 2 + 3 = 5. So you have learned that, you know that. But the problem is that unfortunately when it comes down to the computer algorithms, when it comes down to the computer algorithm, unfortunately the computer cannot try to understand this way or cannot develop an algorithm to solve it. Not necessarily computer, I'm saying that even calculator. अगर आप लोगों ने साइंटिफिक कैलसीज यूज किए हैं तो साइंटिफिक कैलसी के अंदर फाइनली इट इज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. सो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से अगर आपको ये सॉल्व करना है, अनफॉर्चुनेटली ये काम नहीं करता. अनफॉर्चुनेटली ये काम नहीं करता. सो क्यों नहीं करता? आप लोग खुद के एल्गोरिदम लिखने की कोशिश करके देख सकते हो एंड इट इज नॉट पॉसिबल. तो जो महान प्रोग्रामर्स थे दुनिया में, उन्होंने खुद की अकल लगाई, खुद की अकल लगाई और उन्होंने सोचा ये जो प्रॉब्लम जो हम लोग मैथमेटिकली बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, अगर हम लोग उसको सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हैं, क्या इसको हम लोग मशीन से सॉल्व करवा सकते हैं? और फिर उनको पता चला अगर मशीन से सॉल्व करवाना है तो शायद प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स नोटेशन काम आ सकते हैं. सो दिस इज मेनली फॉर द कंप्यूटेशन. दिस इज मेनली फॉर द कंप्यूटेशन कहो या फिर अल्गोरिदम्स कहो या फॉर दैट सेक यू कॉल इट एज फॉर मशीन्स कहो. सो ये जो पार्ट है ये हम लोग हमारे लिए यूज नहीं करते, ये मेनली मशीन्स के लिए यूज होता है. एंड व्हेन आई से मशीन्स के लिए आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द कंप्यूटर, आई एम टॉकिंग अबाउट इवन द कैलकुलेटर्स. तो कैलकुलेटर के अंदर
अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो साइंटिफिक कैलसी आपके पास होना ही चाहिए, ये आपको पता है। सो साइंटिफिक कैलसीज में भी जब ये सॉल्व होता है इंटरनली, वहां पर भी यही एल्गोरिदम यूज किए जाते हैं इनफिक्स प्रीफिक्स पोस्टफिक्स के। जब हम लोग कोई तो कोड में, जब हम लोग प्रोग्राम में लिखते हैं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, आपका कंपाइलर भी इसी को फॉलो करता है, आपका कंपाइलर भी इसी को फॉलो करता है। दिस इज समथिंग दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ये जो पार्ट था, इट वाज लाइक एक्सप्रेशन नोटेशन। इज दिस कंसेप्ट इज क्लियर? इनफिक्स प्रीफिक्स पोस्टफिक्स, इज दिस कंसेप्ट इज क्लियर? बाद में ये नहीं होना चाहिए सर मैंने पूरा इनफिक्स टू पोस्टफिक्स पढ़ लिया और बाद में कोई तो, ऐसे हुआ है मेरे साथ एक्चुअली एक बार। सो यू नो इट वाज लाइक लॉन्ग बैक। सो आई वाज इन अ फ्लो, मैंने शुरू किया स्टैक, मैंने स्टैक किया, स्टैक पढ़ाया, वो पूरा हो गया। इनफिक्स प्रीफिक्स पोस्टफिक्स पढ़ाया और पूरा एल्गोरिदम हो गया। सो सब लोगों ने सुना, सब कुछ हो गया, लेक्चर खत्म हो गया। एक बच्चा मेरे पास आया, सर वो सब कुछ ठीक है, इनफिक्स है, पोस्टफिक्स है, प्रीफिक्स है, सबने पूरा किया, हमको पूरा समझ में आया, लेकिन सर ये इनफिक्स प्रीफिक्स पोस्टफिक्स होता क्या है? ये उसका पहला क्वेश्चन था। और फिर दूसरा क्वेश्चन ये था, सर इनफिक्स प्रीफिक्स पोस्टफिक्स होता क्यों है? हमें जरूरत क्या है? हम लोग तो सीधा सीधा ए प्लस बी लिखते हैं और हमको समझ में आता है। तो भाई ये आपके लिए नहीं है। जब जिस दिन आप खुद का कैलकुलेटर बनाओगे, जिस दिन आपका खुद का कंपाइलर बनाओगे, उस दिन आपको प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के नॉलेज की होना जरूरी है। इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो व्हाट यू वांट टू से? आई वांट टू से दैट जब आप लोग कंपाइलर लिखते हो, जब लोग कैलकुलेटर बनाते हो, अच्छा, पूजा को, आपको भी अभी पता चला? ओके गुड। सो मुझको लगा कि लाइक दैट वाज द ओनली पर्सन, लेकिन होता है, हर बैच में ऐसे होता है, नो प्रॉब्लम। कभी ना कभी पता चलना बहुत जरूरी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो जब हम लोग लिखते हैं बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हम लोग हमेशा इनफिक्स लिखते हैं। एंड बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हम लोग उस इनफिक्स को सॉल्व भी कर लेते हैं एंड वी कैन गेट द रिजल्ट। इट इज वेरी इजी। कंप्यूटर में इनफिक्स को डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया जा सकता, ऐसे से दैट द एल्गोरिथम्स आर नॉट इंप्लीमेंटेबल। तो कंप्यूटर में अगर आपका इनफिक्स नोटेशन है, आपने, आपको समझ में आए इस फॉर्म में लिखा है, अब आपको क्या करना पड़ता है? यू नीड टू फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू द पोस्टफिक्स एंड देन यू नीड टू कम अप विद द रिजल्ट। ऑप्शन नंबर वन, आई से दैट ऑप्शन नंबर वन, या फिर आइदर दिस, मैंने और कहा, or infix, you need to convert into the prefix, you need to convert to the prefix and then you need to solve it, that's it. So I'm saying that these are two things. So ये तो हमारे लिए ठीक है कि अगर मैंने आपको कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दिया, आई एम वेरी श्योर अब आप लोग इतने बड़े इंजीनियर्स हो, तो गिवन एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट विद इन नो टाइम। बट जब इसको आप लोग कहोगे कि यू राइट सच अ प्रोग्राम which should solve the infix notation, direct program writing is not possible. So we need to either follow postfix path or we need to follow the prefix path. algorithm दोनों के लिए बन सकते हैं, postfix के लिए भी, prefix के लिए भी। So which one is faster? दोनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल है। चॉइस इज यूअर्स। जब आप खुद का लिंक लिस्ट, सॉरी, जब लोग खुद का कैलकुलेटर बनाओगे, तो अकल आपको लगानी है कि आपको पोस्टफिक्स अच्छा लगता है या प्रीफिक्स अच्छा लगता है। इट इज अप टू यू, अप टू यू। before I just go ahead, before I just go ahead and tell you in a like kind of programmatically कि ये हम लोग कैसे करेंगे, so पहले I want to show you how we can do it without programmatically. Without programmatically in the sense, I'm saying that I want to keep it very simple. I want to keep it very simple, and I'm asking you that given a statement like this, please pay attention. Given a statement like this in fixed notation, पहला क्वेश्चन है, how do I convert it into the postfix by hand और by manually? हम इसको postfix में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? ये पहले तो हमको ये जानना चाहिए। और बाद में अगर हमको मैन्युअली कन्वर्ट करने आता है, फिर हमें ये देखना चाहिए कि ये प्रोग्रामेटिकली कैसे पॉसिबल है, प्रोग्रामेटिकली इसके लिए क्या एल्गोरिदम है। तो इसका अब जो मैं बताने जा रहा हूं, मैं कंप्यूटराइज मेथड नहीं बताने जा रहा हूं, मैं आपको टेक्निक बताने जा रहा हूं। ये एप्टीट्यूड का ट्रिक है, ये एप्टीट्यूड का ट्रिक है। सर ये टेक्निक क्यों बता रहे हो? मैंने आपको बताया जब आपका फाइनली सॉरी, जब सीडैक का कोर सेट एग्जाम चलेगा, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हर बैच में, हर पेपर में एक या दो क्वेश्चन इनफिक्स टू पोस्टफिक्स या इनफिक्स टू प्रीफिक्स या ऐसे कोई ना कोई तो कन्वर्जन का एक या दो क्वेश्चन 100% आते हैं, 100% आते हैं। तो आपको क्वेश्चन वहां पर आप लोगों को पूरा एल्गोरिदम करने के लिए आपके पास टाइम नहीं रहेगा। तो आपको कुछ तो शॉर्ट ट्रिक्स पता होने चाहिए कि जिसको यूज करके मैं इमीडिएटली सॉल्व कर सकता हूं। ये तरीका, इसलिए पहले अभी मैं आपको जो बता रहा हूं
वो मैं कंप्यूटराइज एल्गोरिथम नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि यूजिंग ट्रिक हाउ यू कैन सॉल्व दैट, हाउ यू कैन सॉल्व दैट। ये एग्जाम में काम आएगा जब एमसीक्यू एग्जाम लिखेंगे तब। और प्रोग्राम लिखने के लिए हम लोग पूरा उसका एल्गोरिथम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे। आई होप यू आर इन सिंक। आर यू देयर? हो गए? हाँ यस है गुड, नो प्रॉब्लम। चलो आगे जाते हैं। तो सर अभी सबसे पहले हमको ये बताओ कि ये कंपाइलर ये ऑपरेटर्स कैसे कंसीडर करता है। तो सर पहले कौन सा, दूसरा कौन सा? यस माधुरी, आई एम कमिंग टू दैट। डॉलर का साइन का मतलब क्या होता है वगैरह वगैरह। तो कौन कौन से ऑपरेटर्स है यहाँ पर, ऑपरेटर कौन कौन से है, उनके ऑर्डर कौन से है, वी नीड टू टॉक अबाउट दैट। आई एम जस्ट गोइंग अहेड एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑर्डर। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये सुना होगा, जब जब हम लोग कंपाइलर की बात करते हैं, कंपाइलर टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड प्रेसिडेंस, precedence and associativity. You must have heard of this. I'm talking about the same. तो precedence wise सबसे highest precedence किसका होता है? I know सबसे highest precedence होता है parenthesis का। ऑब्वियसली मैं सारे नहीं बता रहा हूँ, एक मिनट, आई एम नॉट डिस्कसिंग लॉजिकल एंड लॉजिकल, और हम लोग बेसिक अरिथमेटिक के ऊपर जा रहे हैं, नथिंग एक्स्ट्रा वी आर टॉकिंग अबाउट। उससे नीचे, उससे नीचे द यूजुअली उससे नीचे होता है लेट्स से प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन। ए प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, हम लोग पैरेंथेसिस के लिए मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग विद दिस। प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, नहीं सॉरी, माय मिस्टेक, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन नहीं, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ए मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एंड मॉड्यूलस दैट विल बी हैविंग अ प्रेसिडेंस द सेकंड लेवल। और उसके नीचे वाला लेवल होता है प्लस और माइनस का। Again, as far as C language is concerned, listen carefully. As far as C language is concerned, you can say that there are total 3 operators at this level. Plus, sorry, multiplication, division and modulus. Multiplication, division and modulus, they are there. And then प्रॉब्लम एक छोटा सा है कि सी लैंग्वेज में एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर नहीं है। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर मतलब x रेस टू y, x raised to y, this operator is not supported, is not supported in a C language. We say not supported in Java language also, not supported in C++ also, but there are certain programming languages in which x raised to y is supported, and जिन languages में x raised to y supported है, उन languages में either it is written like this or it is written like this, either it is written like this or it is written like this. In few languages probably the caret is there, and few languages dollar is there. In few languages they are calling it as caret, in few languages they are written dollar. मैं जानबूझ के मैं caret avoid करता हूं क्योंकि सी में कैरेट का ऑपरेटर ऑलरेडी है और वो आपका एक्सऑर ऑपरेटर है। सो आई डू नॉट वांट टू क्रिएट अ कंफ्यूजन विद दैट, एंड दैट इज द रीजन आई हैव कंसीडर्ड डॉलर, एंड दिस डॉलर इज नथिंग बट द पावर ऑपरेटर, एंड दैट इज हैविंग अ प्रेसिडेंस हायर एज कंपेयर टू मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो अगर आप लोग प्रेसिडेंस की बात करोगे, प्रेसिडेंस की बात करोगे, आई एम सेइंग दैट द प्रेसिडेंस गोज इन दिस ऑर्डर। दिस इज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस, द पैरेंथेसिस, and this is उसके नीचे this is like a power, a power has got lower precedence than that, this is having the precedence even lower than that, multiplication division modulus, and this one is having the lowest precedence. तो जब एग्जाम में यूजुअली क्वेश्चन आते हैं, लिसन केयरफुली, जब एग्जाम में यूजुअली क्वेश्चन आते हैं तो एमसीक्यू क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं, तो यूजुअली वो ऐसे दिखते हैं। कौन कौन से? डॉलर, डॉलर, उसके अंदर होता है यूजुअली एक्सपोनेंशियल के, कभी कभी एग्जाम में कैरेट भी होता है, तो कैरेट एंड डॉलर यू कैन टेक इट लाइक इंटरचेंजेबली। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन होता है, यूजुअली मॉड्यूलस नहीं होता है एग्जाम के क्वेश्चंस में, और प्लस और माइनस होता है। सो दिस इज समथिंग, दिस अ प्रेसिडेंस टेबल। नाउ इफ यू अंडरस्टूड दैट, अब मुझको इसको ट्रिक क्या है, हाउ डू आई सॉल्व दैट। मैं कह रहा हूं मैं एप्टीट्यूड की ट्रिक बता रहा हूं, मैं एल्गोरिदम नहीं सिखा रहा हूं। एप्टीट्यूड की ट्रिक आपको कब काम आएगी? एप्टीट्यूड की ट्रिक आपको तब काम आएगी जब, एप्टीट्यूड की ट्रिक आपको तब काम आएगी जब आपको एग्जाम्स देने हैं। तो वापस ये मत बोलना सर इसका एल्गोरिदम कैसे लिखना है। एल्गोरिदम लिखने का ट्रिक अलग, एल्गोरिदम लिखने का अलग से एल्गोरिदम है, दैट आई विल डिस्कस सेपरेटली। डू नॉट अगेन मिक्स अप टू टॉपिक्स, डू नॉट अगेन मिक्स अप टू टॉपिक। अब एग्जाम प्रिपरेशन चल रहा है, तो स्टेप्स आर वेरी सिंपल। स्टेप्स आर, यहां पर जो कुछ भी सॉल्व होने वाला है, जिस ऑर्डर में सॉल्व होने वाला है, यू आर ह्यूमन बीइंग, यू कैन ऑलवेज नो दैट इसमें सबसे पहले सॉल्व कौन सा होगा। ये सबसे पहले तो पैरेंथेसिस सॉल्व हो जाएंगे, यू विल अंडरस्टैंड दैट। अगर सबसे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होंगे, कैन यू टेल मी कौन सा ऑपरेशन, यहां पर 2 बार पैरेंथेसिस है, विच पैरेंथेसिस विल बी सॉल्व फर्स्ट, और कौन से पैरेंथेसिस में कौन सा ऑपरेशन सबसे पहले किया जाएगा।
अगर एज अ आई एम सेइंग दैट विद द ह्यूमन मेथड आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, ये मेरा क्वेश्चन है. ये 6 डिवाइडेड बाय 2 विल बी सॉल्व फर्स्ट. तो 6 divided by 2 will be solved first. You mark it as 1. Okay, that is good. You continue. Can you tell me what is second to be solved? What is second part that will be solved in this case? Yes, now 8 minus 3. That is absolutely correct. So it will try to solve this minus operation. Okay, that is right. What is the third part that will be solved? What is the third part that will be solved? Yes, 7 minus 3. That comes out to be, it is a third operation that will be carried out. The fourth operation. Fourth operation, मैं ऑपरेटर को साइन ला कर रहा हूं. यस, डॉलर. सो योर $1 समथिंग, जो कुछ भी रिजल्ट आएगा, वट एवर. सो दैट इज फोर्थ पार्ट दैट विल बी सॉल्व. ओके, डन. नाउ टेल मी द नेक्स्ट. Yes, now the multiplication should be solved. So I'm saying that this like a fifth one, like a multiplication is to be solved. Sixth. Sixth plus, which plus? Yes, 5 plus wala plus. So this is 6. Next. Next. 9 minus. Yes, correct. That is 7. Next, I guess this plus parenthesis के बाद वाला plus, so that is to be solved. So there are total 8 operations and these 8 operations are solved in this way. मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, तो वापस से स्टूपिड क्वेश्चन मत पूछना सर ये नंबर्स कहाँ से आए. ये कहाँ से नहीं आए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको मैन्युअली आपने गेस किए कि कैसे 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 रन होगा एंड देन दैट यू आर मार्क्ड इट. अब हमें इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन करना है. पे अटेंशन. अगर आपको इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन करना है, मैं सिर्फ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स पढ़ाने वाला हूं. इनफिक्स टू प्रीफिक्स इज योर होमवर्क. आई रिपीट, मैं सिर्फ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स पढ़ाने वाला हूं. इनफिक्स टू प्रीफिक्स इज योर होमवर्क. वो आपको करना है. तो जो पोस्टफिक्स के लिए लॉजिक है वही प्रीफिक्स के भी लिए लॉजिक है. मैं एक ही बता रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन एंड पे फुल अटेंशन. तो जो जो ऑपरेशन सॉल्व होने वाले हैं उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो. लाइक फॉर एग्जांपल, इट इज 6 डिवाइडेड बाय 2. 6 डिवाइडेड बाय 2 इज फर्स्ट ऑपरेशन. यहां पर मैं कह रहा हूं डिवीजन शुड बी बिफोर. नहीं, हमें आंसर नहीं लिखना है, हमें उसको इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है. सो 6 बाय 6 टू सॉरी 6 डिवाइडेड बाय 2 है. व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू कन्वर्ट इन 6 टू डिवीजन. आई होप यू गॉट द पॉइंट. हमें आंसर नहीं लिखना है, हमें उसको कन्वर्ट करना है. इज दैट क्लियर? सो इनफिक्स टू पोस्टफिक्स. ए पोस्टफिक्स का मतलब क्या है? ऑपरेटर शुड कम आफ्टरवर्ड्स. सो 6 टू डिवीजन. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? और जो सॉल्व किया है, लिसन केयरफुल, जो सॉल्व किया है उसके नीचे अंडरलाइन करो और जो बचा हुआ पार्ट है वो कॉपी पेस्ट करो. मैं कह रहा हूं बचा हुआ पार्ट कॉपी पेस्ट कर लो. बचा हुआ पार्ट कॉपी पेस्ट कर लो. मैं आपको स्टेप बता रहा हूं ट्रिक्स के. Okay, that is going good. Tell me the next step. Tell me the next step. Now it is 8 minus. इसका पहला ऑपरेंड है 8. पे अटेंशन. इसका पहला ऑपरेंड है 8. दूसरा ऑपरेंड है 6 टू डिवीजन. ये जो पूरा सॉल्व किया है, जो पूरा सॉल्व किया है, दैट इज योर सेकंड ऑपरेंड. और बीच वाला जो माइनस साइन है, यू पुट इट एट द एंड. यू पुट इट एट द एंड. यू पुट इट एट द एंड एंड देन देयर यू गो. एवरीथिंग इज ऑल राइट. यू कंटिन्यू फर्दर. You continue further. Tell me the next. Tell me the next. ये अपना थर्ड ऑपरेशन कौन सा था? 7 minus 3. 7 minus 3. Let us solve only that much. 7 3 minus. Again बची हुई सारी चीजें कॉपी करो by yourself. प्लस 1. और जो ऑलरेडी सॉल्व किया है जिसके नीचे अंडरलाइन है वो आपका पूरा का पूरा एक ऑपरेंड है. उसको वैसे के वैसे रखो, उसका मार्क मत हटाना. ऑल राइट. व्हाट इज द नेक्स्ट ऑपरेशन टू बी डन? Next operation is like a dollar or dollar. So first operand is 1. Second operand is 7 3 minus. Dollar goes at the end. It is there. You continue further. Rest of the stuff is again to be copy pasted. 8 6 2 division minus multiplication. 4 minus 9 plus 5. Oh, that is good. Good. What is next step? नेक्स्ट स्टेप. ये अभी अभी हम लोगों ने क्या सॉल्व किया? डॉलर सॉल्व किया. तो ऊपर आपने नंबर लिखे हुए हैं. आई गेस नाउ इज अ 4 स्टार. सो ऑपरेशन नंबर 5. सो फर्स्ट ऑपरेंड इज 4. फर्स्ट ऑपरेंड इज 4. सेकंड ऑपरेंड इज 6 टू 8 6 टू डिवीजन माइनस एज इट इज एंड देन द मल्टीप्लिकेशन गोज एट द एंड. रेस्ट ऑफ द स्टफ is to be copied as it is. It goes good. So this is again not a problem. This is going well. And next, repeat.
Next step, number 6. It is 5 plus 9. Let us solve that much of part. 5, 9 plus. 5, 9 plus. Rest of the thing are to be copied as it is. As it is. Okay, that is good. What is the next step to be done? 6, 7. ये आपका 9 minus 4. So 9 minus 4. Have a look at this. अब ये वाला ऑपरेशन की बात चल रही है. We are talking about that. Okay. इसका पहला ऑपरेंड. See that इसका पहला ऑपरेंड है 5 9 plus पूरा का पूरा. That we have taken as it is. Second operand है this whole stuff. This whole stuff. Second operand you have taken it as it is. And then the minus operation that you are putting it at the end. Okay, it is there. Done. This is also done. You continue further. Plus you copy the rest of the stuff as it is. And now I guess the last operation to be done. Last operation to be done. You see that this is like a whole first operand is to be copied as it is. The second whole operand is to be copied as it is. And at the end, you want to add one plus there, a plus there. This is done. Finally. So what is this? This is the postfix equivalent of this infix. This is a postfix equivalent of this infix. So is it so? Yes, absolutely. Is the process clear? Is the process clear? Now, given any expression, you will be able to do it by yourself, right? अब बाय द वे ये इनफिक्स टू पोस्टफिक्स का प्रोसेस था. ये इनफिक्स टू पोस्टफिक्स का प्रोसेस था. सो इनफिक्स टू प्रीफिक्स के लिए क्या तीर मारना है? इनफिक्स टू प्रीफिक्स के लिए क्या तीर मारना है? लेट अस जस्ट गो अहेड. इनफिक्स टू प्रीफिक्स, पे अटेंशन. सेम स्टोरी वंस अगेन. सेम स्टोरी वंस अगेन. अगेन यू पुट ऑल दिस थिंग्स. ये जो जैसे आप लोगों ने किया था वैसे वापस से करो कि पहले ये नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8. ये चलो सारे नंबर्स अपने अपने जगह पे आ गए. लेकिन रुको, what is the process to be done? What is the process to be done? Now the process to be done, ये 6 divided by 2 नहीं करना है. 6 is your first operand, 2 is your second operand, और ऑपरेटर उसके पहले जाएगा. ये ऑपरेटर उसके पहले जाएगा, ऑपरेटर उसके बाद में नहीं जाएगा. I hope you got the point. And if you got the point, just follow the same process to come up with the prefix result. I'll give you 2 minutes. Follow the whole process step by step. मैं करके नहीं दिखाने वाला हूं. जैसे आप लोगों ने यहां पर किया है वैसे ही. Remember that in each step आपको ऑपरेटर ऑपरेंड से पहले लेना है. हर एक स्टेप में ऑपरेटर ऑपरेंड से पहले लेना है. टेक अप दिस एंड फॉलो द स्टेप. मैंने सिर्फ एक स्टेप किया हुआ है एंड आई वांट यू पीपल टू डू इट नाउ. लैब के लिए वेट मत करना, अभी करो. डू इट ऑन पेपर. डू इट ऑन अ पेपर एंड कम अप विद द रिजल्ट. फाइनल प्रीफिक्स रिजल्ट क्या आएगा? टेक 2 minutes. Shubham has come up with some answer. चलो आप लोग, you people can also try it and check whether the Shubham's answer is correct or not. Go ahead, try it, let it be wrong. Sankalp also has got same answer. Okay, good. Shubham and Sankalp has got same answer. अरे वाह, सब लोग इंटेलिजेंट है, सबका एक जैसा ही आंसर आ रहा है. क्या बात है? Okay, that is good. Wow,
seems that you people are so intelligent that I'm not even telling you and you are understanding it. क्या बात है? चलो good. तो सर कैन वी सॉल्व दिस? नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू ये आपको सॉल्व करना है. सो लेट मी जस्ट ट्राई इट क्विकली. लेट मी जस्ट ट्राई इट क्विकली विद अ क्विक वन. Let's say division 6 2, that comes first, minus 8 that comes before it, then minus 7 3, it is over there. $1 or $1 1, that will probably come before that. You go for like a star 4. Okay, it will go like this. Plus 5 9, yes it is there. Minus 7 should be before that. And finally last वाला जो plus था इन दोनों के बीच वाला, that last वाला जो plus था, that plus should come even before that. So plus should come even before that, and that is your final result. I hope this is the same answer that everyone has got. Is this correct? Oh, so you find that तो सर इतने सारे स्टेप्स करने की जरूरत नहीं होती है क्या? As I said that I just shown you, if you are like absolute beginner, learn it step by step. But if you have done enough of practice, let me tell you, you can do it well without even following the steps. सो इनफिक्स टू पोस्टफिक्स भी हम लोग कर सकते हैं, इनफिक्स टू प्रीफिक्स भी कर सकते हैं. सो अगर आप लोग एग्जाम में, अगर आपका प्रैक्टिस है तो एग्जाम में दिस प्रॉब्लम शुड नॉट टेक मोर देन 10 सेकेंड्स. अगर आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस है ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने का, तो एग्जाम में दिस शुड नॉट टेक मोर देन 10 सेकेंड टू सॉल्व इट. एंड एज अ होमवर्क, गूगल के ऊपर जाओ, इसके रिलेटेड एमसीक्यूज ढूंढो. आई रिपीट, इसके रिलेटेड एमसीक्यूज ढूंढो और जितने एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हो उतने सॉल्व कर लो. दैट विल बी, अभी जो सितंबर बैच का एग्जाम चल रहा है, आई हैव सीन दैट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यही कर रहे हैं आजकल. सो रे ऐसे 2 क्वेश्चन तो आएंगे ना इसमें, 1-2 क्वेश्चन आएंगे तो कम से कम 1-2 क्वेश्चन के तो आंसर ठीक से लगने चाहिए हमारे. अरे ठीक है, नो प्रॉब्लम, गो अहेड एंड डू द प्रैक्टिस देन, राइट? एनीवे, सो एज आई सेइंग दैट इट वाज लाइक एग्जैक्टली सेम. डन. चलो, things are done well. We understand what is infix, what is postfix, what is prefix on paper. ये ऑन पेपर वाला तो ठीक है, लेकिन सर प्रोग्रामेटिकली कैसे करना है? कंप्यूटर को ऐसे नहीं बोल सकते ना भाई तू नंबर दे और फिर मैं उसको फॉलो करता हूँ. नहीं, नॉट एट ऑल. सो फॉर दैट यू हैव टू यूज द एल्गोरिदम एंड देन यू नीड टू यूज अ काइंड ऑफ अ स्टैक. तो सर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? वैसे तो हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे, लेकिन अभी जितना टाइम अपने हाथ में है उतने हिसाब से सारे एल्गोरिदम नहीं हो पाएंगे कि हाउ टू कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, हाउ टू कन्वर्ट इनफिक्स टू प्रीफिक्स, और वापस से हाउ टू कन्वर्ट पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन, and for that sake how to convert the prefix evaluation. As I said that all of them will not be possible to be completed at the moment. तो सर कोई आसान तरीका बता दो. आसान तरीका ये है दैट एक काम करते हैं, वी विल स्टार्ट विद द पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन. वी विल स्टार्ट विद द पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन. वी विल ओनली डू दिस मच एल्गोरिथम टुडे. प्रीफिक्स इवैल्यूएशन यू कैन टू टेक इट एज योर होमवर्क, आप लोग खुद भी कर सकते हो. और कल हम लोग इनफिक्स टू पोस्टफिक्स वाला देखेंगे. और एक चीज अगर आपने नोट नहीं की होगी तो आपने नोट करनी चाहिए, दैट पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स में कभी भी पैरेंथेसिस नहीं होते. हैव यू नोटेड दैट? जो पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स जो हम लोगों ने बनाया है, इफ यू सी इट वेरी केयरफुली, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स में कभी भी पैरेंथेसिस नहीं होते. हैव यू नोटेड? there are no parentheses there, there are no parentheses there. So ये नोटेशन में पैरेंथेसिस क्या होते हैं, ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है. ये आपको देखना भी, समझना भी है और याद भी रखना है. एनीवे, कमिंग बैक, तो सर ये पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन हम लोग कैसे करेंगे? I said it's very simple. This is a kind of expression that I have got. Let us go step by step. Let us go step by step and you start solving it one by one. You first of all take a stack. सर ये स्टैक किसका है? लिसन, दिस इज अ स्टैक ऑफ ऑपरेंड्स. ये जो स्टैक है, दिस इज अ स्टैक. व्हाट यू नीड इज अ ऑपरेंड स्टैक, ऑपरेंड स्टैक. और बिफोर दैट, sorry to disturb you, but can you please help me
and solve this expression by yourself. जैसे नॉर्मल बीइंग अ ह्यूमन आप लोग जैसे सॉल्व करते हो, जो आपको स्कूल में पढ़ाया गया था, क्या आप लोग इसको क्विकली सॉल्व करोगे? एंड विल यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द रिजल्ट? मैं स्टैक और क्यू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि नॉर्मली जिन लोगों का मैथमेटिक्स अच्छा है, जिनका एप्टीट्यूड अच्छा है, क्या ये क्विकली इसको सॉल्व करेंगे एंड विल लेट मी नो द रिजल्ट? अक्षय का आंसर -5 है. कैन समवन कंफर्म दिस? इज अक्षय ऑन राइट ट्रैक? Yes, -5. So we'll go with the majority. We'll go with the majority. Let us hope. तो अभी हमें ये चेक करना है, सर यहाँ पर आंसर -5 आ रहा है, तो हम लोग ये जो पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन वाला मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, will it still give me the -5 or will it give something different? Ideally it should give the -5 only. Let's see how all it goes. What is the algorithm? Listen the algorithm. Algorithm is very simple. पहले सुनो, बाद में मैं पेपर वर्क दो बार करके दिखाता हूँ, बाद में कोड लिखने का तो वैसे भी हो जाएगा. हाँ, what I'm saying is that algorithm is saying that if you find the operand, push it onto the stack. If you find the operand, push it onto the stack. If you find operator, pop two arguments from the stack, do the operation, perform the result, put the result onto the stack. फिर से एक बार, if you get the operand, push it onto the stack. If you get the operand, push it onto the stack. If you get the operator, pop two operand from the stack, do the calculation, whatever is the result, push the result back to the stack, and keep doing it for all elements, from here to here. Keep doing it for all elements from here to here. Keep doing it for all the elements. And if you're doing it for all elements here to here, उसके बाद पे जो लास्ट वैल्यू स्टैक में बचेगा, that is nothing but your final result. Just a minute. Okay. हाँ, तो मैं क्या बता रहा था आपको? सो वी वांट टू डू इट लाइक दिस. सर क्या एल्गोरिथम है? बहुत ही स्टूपिड वाला एल्गोरिथम लग रहा है. स्टूपिड ही है. लेट अस ट्राई इट वन बाय वन. लेट अस स्टार्ट इट. 5, it is operand, push it onto the stack. Next, 9 is operand, push it onto the stack. Continue further. Plus is operator, a plus is operator. Pop 2, a pop 2. Let me pop 9, let me pop 5. Do the calculation. The result comes out to be 14. Whatever 14, do the addition. Whatever is the result, push the result back to the stack. Don't worry, मैं repeat करूंगा. Please pay attention. Continue further. We have like a 4 operand, push it onto the stack. Next, 8 operand, push it onto the stack. 6 operand, push it onto the stack. 2 operand, push it onto the stack. Division operator. A division is operator. Pop. Please note, जो आप लोग दूसरा पॉप करोगे, जो फर्स्ट पॉप करोगे, इट विल बी द सेकेंड ऑपरेंड. जो दूसरा पॉप करोगे, इट विल फर्स्ट ऑपरेंड. 6 divided by 2 will be 3. That 3 you want to push it back to the stack. 3 you want to push it back to the stack, and again you continue. You continue like minus. You continue further. 3 you pop second operand. 8 you pop first operand. 8 minus 3, result is 5. You want to push the 5 onto the stack. Let's continue further. Next, what is next? Next, you have like a multiplication. You pop 5, you pop 4. 5 4 the result is 20. Take 20, push 20 onto the stack. You continue further. Next one is minus. You get 20 second operand. You get 14 first operand. Result comes out to be -6. Put -6 onto the stack. See, the algorithm is very simple, straightforward algorithm. You continue further. Next one is 1. Put it onto the stack. Next one is 7.
Next one is 7, put it onto the stack. Next one is 3, put it onto the stack. Next one is minus, wait, minus, you pop 2, you pop 3, you pop 7, 7 minus 3 comes out to be 4. The result is 4, put it onto the stack. Okay, that is good. Next, you continue further. You continue further. Next is dollar. A dollar is what? Dollar is nothing but the exponential or power operator. So again, you got like a 4, you got like 1. 1 raised to 4. 1 raised to 4, result is still 4. Sorry, 1 raised to 4, result is still 1. Result is 1. Push that 1 onto the stack. This is done. And you get the last one. The last one, you got like a plus. You got plus, continue further. So plus, you get 1, it is there. You got, let's say, minus 6, you got there. Minus 6 plus 1, it is minus 5. Put it onto the stack. And then now you find it. Hey, what is left? There is nothing left. When nothing left, you get the final one, and this is nothing but your result. Is it the same result? I hope the algorithm is pretty simple, pretty straightforward. यहाँ पर कोई अकल नहीं लगानी है. So algorithm क्या कह रहा था? Algorithm ये कह रहा था कि traverse, I'll just mention somewhere. Algorithm कह रहा था traverse postfix, traverse postfix from left to right. Yes, one by one. That is like a point number 1. Then if the symbol or character is operand, it is operand, push on stack. That is second. Third thing. What is the third thing? If symbol is operator, what is to be done? Pop 2 arguments from stack, calculate result, and push on stack, right? Just remember a basic rule over here. The first popped is second argument, and second popped is nothing but your first argument, or argument नहीं कहना चाहिए, operand कहना चाहिए actually, or the first operand. I hope you will remember that. Done. And fourth step, now you need to simply say repeat. So repeat 2 and 3 until all values, you can say all values from postfix expression, sorry, all values from expression are done, are completed. Finally, what is last step? Pop the final result, from stack, and then you can return it. It is very simple. एकांश, प्रीफिक्स के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे. आई होप देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम. जो अभी हम लोग एक कर रहे हैं वो आपको समझ में आ गया है. सो एक पहले खत्म करो, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल. प्रीफिक्स वी कैन डू इन लाइक अ टुमारो सेशन. Do not mix up the stuff. Let us go one at a time, and then we can quickly make a code for this. File, new project, Java project. I'm just going ahead, and we are talking about, let's say, expression. ये आपका expression solving है, and let's say finish. Done. All right.
what we have got like a expression main. ऑल राइट, और हम लोग वैसे भी हम लोग डिसाइड किया है हम लोग खुद का स्टैक वापस से नहीं बनाने वाले, विल बी यूजिंग अ रेडीमेड स्टैक. So if you are using a ready-made stack, let us take the postfix expression from the user, or you can even hard code it for time being. So let me go ahead and let me even hard code it for time being. String postfix is equal to, this is the expression, which one we have got like a 5 9 plus 4 8 6 2 डिवीजन माइनस, चेक करना मैंने कुछ टाइपिंग में कुछ गड़बड़ किया होगा तो लेट मी नो. 173 माइनस डॉलर प्लस, आई गेस इट इज करेक्ट, 5 9 वगैरह 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 वगैरह. सो दैट आई हैव जस्ट मेंशन वन बाय वन, एंड देन आई वांट टू राइट अ फंक्शन. आई वांट टू राइट अ फंक्शन. व्हाट इज दैट? रिजल्ट. लेट्स से solve postfix is kind of a function that I want to write it, and in this below function I want to pass the postfix expression. I'm passing the postfix expression and I'm looking for the final result from this. ये अगर मैंने इसको postfix भेजा तो उसका result क्या आता है, और जो result आता है वो actually -5 आना चाहिए जिसको मुझको यहाँ पर print करना है. This is something I'm looking for. Let's go ahead. Let us go ahead and we continue further. तो क्या लॉजिक क्या लगाना है? You want to traverse from left to right and each and every symbol. Okay, I'm just going ahead. For I is equal to 0, and I can simply say that post dot length. Am I correct? And each place I can get each symbol separately, simply saying that post dot character at I. Can I get it like this? Yes, absolutely. I'm accessing one by one character. I'm accessing character one by one. What is next job to be done? What is next job to be done? I want to check whether it is a digit, whether it is a non-digit. क्योंकि अगर वो digit है तो operator है, sorry operand है. अगर वो non-digit है, it means it is a operator. So how do I check whether it is a digit or not? ये कैसे पता चलेगा ये digit है या नहीं है? ASCII वैल्यू से चेक पता चलेगा, एब्सोल्युटली पॉसिबल. या फिर देयर इज अ रेडीमेड, रैपर क्लास के अंदर मेथड होता है is digit. There is a method available is digit which will check the ASCII value, and if it is a digit you want to push it onto the stack. So you can simply say that I want to push it onto the stack. So where is the stack? Oh, why don't you go ahead and you create a stack? Simply say stack of integer s is equal to new stack. This is in front of you, so you can simply say push it. Otherwise, otherwise, what do you want to do? I want to pop two values. Okay, let us go ahead and let's say that I want to pop two values. How do you pop two values? S dot pop integer a is equal to s dot pop. मैंने जानबूझ के नाम देते वक्त ही ऐसे दिए b और a दिए, so that the first popped is a second argument, second popped is a first argument, and then I want to do the calculation of these two. जो कुछ भी आपका symbol होगा, as per that symbol, this operation should be done. And once this operation is done, whatever is the result, that result I want to push it onto the stack. What is the result? That I want to push it onto the stack. And what should be done at the end? At the last, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, simply say s dot pop and you return from there. Simply say s dot pop and you return from there. This is a kind of a simple algorithm that we follow. अब इसमें कुछ दो चार hurdles है. Let us solve that. पहले तो a symbol b ऐसे लिखने से वो solve नहीं होने वाला है. ये आपको भी पता है और मुझको भी पता है. So we can write one helper function for this. One helper function which is taking a, which is taking b, and which is also taking the operator that you are trying to solve. Okay, that is good. Operator I'm saying, we can say, let's say kind of character operator. ये अपना operator यहाँ पर character है. You can check it. Hey, what you can check it over there? What I can check it over there? I can simply check कि आपका operator क्या है, and based on operator we can do the operation. Let's say for example, if your operator is kind of a dollar operator, तो डॉलर ऑपरेटर कैसे सॉल्व करते हैं ये हमें पता है. ये डॉलर ऑपरेटर कैसे सॉल्व करते हैं? वी कैन डायरेक्टली यूज math dot power kind of function, and we can simply say a raised to b, that will directly give me the result. That is probably pretty simple job
that I can do it. If for the dollar it is very easy, and what about others? It will be actually even easier than that, क्योंकि उसके लिए तो आपको function भी call नहीं करना पड़ेगा. If you have got next, you like a multiplication, I can simply do a into b. We got the point, and you can return that value, return a into b. I'm just writing a single liner, तो मुझको अलग से ब्रेक लिखने की कोई जरूरत नहीं है. So if you have like a division, go ahead. It's a division. If you have let's say modulus, go ahead like a modulus. You want to write like a plus, write a plus b. You do that. Like a minus, you write a minus b. That is also in front of you. This is also done. अगर कुछ भी match नहीं हुआ, तो let me write something zero, or you may even throw the exception. That saying that invalid operator or something like that. You might think of throwing an exception. So it is hardly one liner code that we have written. और ये जो calculator function है, why don't I call that calculator function from here? Calculator a, b, and then the symbol that I'm passing over there. Is it done? So I have solved one problem, but there's one more problem still pending. What is another problem? ये जो stack है, ये stack of integers है. I hope आपको दिख रहा है. ये जो stack है, stack of integers है. और मुझको यहाँ पर क्या चाहिए? ये जो मेरे को symbol मिल रहा है, ये symbol मेरे को character मिल रहा है. It is ASCII value of 5, और it is ASCII value of 9, और it is ASCII value of 4. तो मुझको वो characters मिल रहे हैं. My question is that how do I convert character into integer? My question is that how do I convert character into integer? Just by typecasting करने से character integer में convert हो जाता है क्या? Do you convert the ASCII value 5 to integer 5? No. Yes, you can do the probably parse method. Absolutely right. But if you do the parse method takes string as argument. I hope आपको ये भी पता है. The parse method is taking string as argument. Have you heard of it? तो पहले तो आपको उसको string में लेना पड़ेगा, isn't it? So let me just do one thing. Let me first of all find out. Let's say it is an operand, and if it is an operand, I want to give the symbol to that. So that symbol, how do I convert? So again, you can have simply character dot toString है. Yes, toString है. Let me first of all convert into the string, and then this string let me convert it into this. अगर आपके पास कोई रेडीमेड मेथड है सर, वो कैरेक्टर टू इंट डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है. मतलब ASCII वैल्यू ऑफ 5 से इंटीजर 5 में कन्वर्ट होता है. यू कैन इवन यूज दैट. अभी मुझको जो याद आया मैंने वो लिखा. दैट्स इट सर. खत्म हो गया कोड, खत्म हो गया सर. ये काम करता है. रिजल्ट -5 आना चाहिए. लेट्स सी रन एज जावा एप्लीकेशन. वाओ, इज देयर? हेलो, I hope you find that it is working. So simple, so straightforward, and there's nothing great that we are doing. So as I said that one or two tricks that we have played, let me just quickly go through the code and then we'll wind up. The code to be gone through, what I'm saying is that I have written one helper function, calculator function. Why calculate function? क्योंकि मुझको दो numbers का arithmetic करना था और जो भी result है वो result return करना था. तो दो number का arithmetic करने के लिए I have taken like a and b, and then operator. Based on operator, जो भी ऑपरेशन होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा तो मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, डिवीजन होगा तो डिवीजन कर रहे हैं, जो भी ऑपरेशन होगा वो हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं और उसका जो रिजल्ट था हम लोग रिजल्ट रिटर्न कर रहे हैं. ओके, दैट इज गुड. व्हाट इज माय प्राइमरी लॉजिक? द प्राइमरी लॉजिक इज वेरी सिंपल. आई नीड stack of operands. You need stack of operands. So you have created it, no problem. Then what you are saying that traverse from left to right, traverse postfix from left to right. You continue further. What do you do? You say that get each character go, or each symbol from string, from expression, postfix expression. You take it like each symbol. Okay, you are taken up. If symbol is operand, if symbol is operand, what to do? If symbol is operand, I'm saying that convert it to integer and push on stack. Otherwise, pop two operands from stack. Correct? Go ahead, calculate the result.
and push result on stack, and keep on repeating this. Repeat, repeat for all symbols in in expression, in postfix expression. All right, that you have done it. Final result at the end, pop final result, pop final result from string, final result from string or from stack, and return, and return. That is something in front of you. That's it, over. एकांश का क्वेश्चन था, सब पोस्टफिक्स में तो ठीक है, बट प्रीफिक्स में ये कैसे होगा? प्रीफिक्स में भी ऐसे ही होगा, एक ओनली डिफरेंस है, प्रीफिक्स में दो डिफरेंस है। यहां पर हम लोग लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करते हैं, प्रीफिक्स यू ट्रेवर्स राइट टू लेफ्ट। प्रीफिक्स में पहला चेंज है, यू ट्रेवर्स राइट टू लेफ्ट, चेंज नंबर 1। एंड चेंज नंबर 2, यहां पर ये जो हम लोग पॉप कर रहे हैं, यहां पर हम लोग पहले बी को पॉप कर रहे हैं, बाद में ए को पॉप कर रहे हैं, वहां पर हम लोग पहले ए को पॉप करते हैं, बाद में बी को पॉप करते हैं। सो ये ऑर्डर चेंज नहीं करना है। सो दीज आर टू डिफरेंसेस, अदरवाइज यू कैन इवन सॉल्व द प्रीफिक्स। I hope Ekansh, I have answered your question. You can try to convert it into the program. If it is not, definitely tomorrow we'll look at that. I believe this is done. Can you repeat line number 35, 36? 35, 36. See, what we are doing is that हमारे पास जो string है, ये जो postfix है, it is basically string है। string का मतलब क्या होता है? हमारे पास ASCII values है। सार्थक, हमारे पास यहाँ पर ASCII values है। So ASCII value of 0 is 48. ASCII value of 1 is, let's say, 49. ASCII value of 2 is, let's say, 50. So these are the ASCII values are there. लेकिन हमें उसको एज ASCII वैल्यू ट्रीट नहीं करना है, हमें उसको ASCII वैल्यू करके ट्रीट नहीं करना है, हमें उसको नंबर करके ट्रीट करना है। सो ASCII वैल्यू 2, I need to treat it as a number 2. The question is, how do I convert from, how do I convert the character to integer? Is Pooja is suggesting that can we use A2I over here? Definitely you can use A2I over here if you are into the C language. You can use A2I over here if you are into the C language. But problem is that हम लोग A2I यहाँ पर नहीं यूज कर सकते, हम लोग C में नहीं, हम लोग जावा में। तो जावा में given a single character, how do I convert into the corresponding integer? तो the trick that I have followed, सार्थक over here, ये जो भी 5 आएगा, let's say for example, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल, आपके पास कैरेक्टर है 5, एक कैरेक्टर है 5, टू स्ट्रिंग करके मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं स्ट्रिंग 5 में। सो सार्थक, योर फर्स्ट स्टेप, कैरेक्टर 5 आई हैव कन्वर्टेड स्ट्रिंग 5, एंड दिस स्ट्रिंग 5 जब मैं कर रहा हूं इंटीजर डॉट पारसेंट, यहां पर हमने अप्लाई किया है टू स्ट्रिंग, द टू स्ट्रिंग इज गिविंग मी दिस, एंड देन जब मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं parcent, so that parcent is converted into the number 5. I hope you people understand that this is different. This is a 5 with the ASCII value, कुछ तो इसका ASCII value कितना है 53 or something like that, इसका ASCII value 53 है, and this is like a numeric 5. Is that clear, सार्थक? What we are doing? So पहले लाइन में हम लोग टू स्ट्रिंग किया है और दूसरे लाइन में हम लोग पारसेंट किया है। ओके, दैट इज गुड। यहाँ पर वाइडनिंग डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम। और कुछ क्वेश्चन है? कुलदीप का क्वेश्चन है, why we are not putting a break in the cases? Kuldeep, if you are interested in, go ahead and put the break as well. I really don't mind you people writing a break over there. But वैसे break का purpose क्या होता है? What is the purpose of break? कि वो अगली केस एग्जीक्यूट ना करे। I guess that is the purpose of break. If that is the purpose of break, वैसे भी रिटर्न से वो यही से रिटर्न होने वाला है ना? I hope Kuldeep you got my point. वैसे भी यही से रिटर्न होने वाला है, तो अगली केस वैसे भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। रादर जावा के कोड में अगर आपने यहां पर रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है, वो मेरे को एरर दे रहा है। कैन यू रीड द एरर? लिसिंग दैट अनरीचेबल कोड, वो कह रहा है अगर यहां से रिटर्न होगा तो मेरा ब्रेक रन कैसे होगा यहां पर? इट इज नॉट गोइंग टू रन। दैट्स इट, एंड दैट इज द रीजन वी हैव नॉट रिटर्न अ ब्रेक देयर। वैलिड। एनी अदर क्वेश्चन इज देयर? No questions? Okay, I'll stop over here for now. If someone has got a question, definitely I'm waiting for a minute. Otherwise, you can leave. Thank you very much. Do practice. See you tomorrow once again.